Good morning, students, and very welcome to the class. Today, we are going to start a poem in our English literature book that is on page number 11, and the name of the poem is On the Bridge. And this poem on the bridge, the poetess means who has written the poem. The poetess of this poem is Kate Greenaway, and she is very famous English, we can say, illustrators, book, famous writer or a poetess of her time, as she has written a lot of things for the children. So let's start the poem. In this poem, the speaker and a companion are on the bridge. As we can see that the speaker and the companion, means her friend, are standing on the bridge, and after then what they are thinking and what they are talking about. The poem is related to that, so just start. If I could see a little fish, that is what I just now wish. I want to see his great round eyes always open in surprise. Yes, here the speaker is saying, or we can say the wish of the speaker is that she wants to see a little fish. The speaker and her friend both are standing on the bridge and they are just talking to each other. And the speaker is saying that my wish is only this, that I want to see a little fish. And she is so much surprised while thinking about the fish. जब स्पीकर और उसकी फ्रेंड ब्रिज पे खड़े हैं और वो बातें कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हमारी एक ही विश है कि हम क्या देखना चाहते हैं, लिटिल फ़िश। और वो बहुत सरप्राइज़ हैं। सरप्राइज़ इसलिए हैं क्योंकि जो फ़िश है उसकी जो आइज़ है वो हमेशा कैसी होती हैं, द ग्रेट राउंड आइज़ ऑलवेज ओपन। उसकी आइज़ हमेशा ओपन रहती है, कभी उन्होंने आइज़ की, फ़िश की आइज़ बंद नहीं देखी है। सो दे आर सो मच सरप्राइज अबाउट दिस फैक्ट। और उनकी विश भी क्या है कि हमें अभी एक फ़िश दिख जाए। कैसी फ़िश? विद द ग्रेट राउंड ओपन आइज। नेक्स्ट स्टैंजा। आई विश अ वाटर रैट would glide slowly to the other side, or a dancing spider sit on the yellow flags a bit. What is their wish? First wish they are doing that they want to see a fish with the great round open eyes. Then they are saying, the speaker is saying, I wish to see a water rat would glide. Water rat, that they are thinking that हम क्या देख सकें, एक वाटर रैट को दे सकें जो कि क्या कर रहा हो, स्लोली ग्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्मूथली एंड क्वाइटली, जो पानी में धीरे धीरे क्वाइटली क्या कर रहा हो, जा रहा हो। वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर खड़े होके, द गर्ल एंड हर कंपेनियन, दैट एज वी आर स्टैंडिंग हियर। ऐसा हम भी कभी कभी विश करते हैं, इमेजिन करते हैं, द सेम दे आर इमेजिनिंग डेट काश हमें अभी एक फ़िश दिख जाए। तो सेकंड गर्ल कह रही है, नो, काश मुझे तो अभी यहाँ से एक वाटर रैट ग्लाइड करता हुआ दिखे। दे आर जस्ट इमेजिन। और अ डांसिंग स्पाइडर सिट ऑन द येलो फ्लैग्स अ बिट। या फिर हमें येलो फ्लैग्स, here the flag means the flowers. The speaker has used the word flags for the flowers.
या फिर हमें अभी जो नीचे फ्लावर्स हैं येलो फ्लैग उन पर बैठा हुआ स्पाइडर दिख जाए, और अ डांसिंग स्पाइडर सिट ऑन द येलो फ्लैग्स अ बिट, वहाँ बैठा हुआ दिख जाए. Then the next stanza is what they are thinking then. I think I will get some stones to throw and watch the pretty circles show. Then what they are wishing, फिर उसके बाद वो क्या विश कर रहे हैं कि अभी आई थिंक आई विल गेट, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मुझे थोड़े से स्टोन्स मिल जाएं टू थ्रो, फेंकने के लिए, एंड वॉच द प्रीटी सर्कल शो, क्योंकि जब हम वाटर में स्टोन फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वाटर में क्या बनते हैं, जहाँ पे स्टोन को फेंका जाता है उसके चारों तरफ सर्किल बन जाता है. देन दे आर इमेजिनिंग कि क्या तो हमें थोड़े से स्टोन्स मिल जाएं ताकि हम उनको थ्रो करके वाटर में ऊपर से क्या देख सकें, प्रीटी सर्किल्स. Or shall we sail a flower boat and watch it slowly float? या फिर हमें यहाँ पर अभी ब्रिज के ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो हमें नीचे क्या दिखाई दे, फ्लावर बोट. विच बोट? द बोट मेड ऑफ फ्लावर, एंड वॉच इट स्लोली फ्लॉट, और हम उसे धीरे धीरे तैरते हुए देख सकें. That's nice, because you never know how far away it means to go. And when tomorrow comes, you see, it may be in the great wide sea. फिर वो कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा होगा अगर हमें कोई फ्लावर बोट दिख जाए यहाँ पर तैरती हुई धीरे धीरे, जो यहाँ से फ्लॉट कर रही हो, और वो तो हम में से किसी को मालूम भी नहीं होगा कि वो तैरते हुए, शायद जब तक हम कल यहाँ दोबारा उनको देखने आए, उस बोट को देखने आए, तो हो सकता है वो एक ग्रेट सी मीन्स बहुत बड़े समुद्र का हिस्सा बन के उसमें बहकर चली जाए. मीन्स इन दिस poem the speaker is imagining with her companion, with her friend. जो यहाँ स्पीकर है वो अपनी फ्रेंड के साथ कहाँ पर है, ऑन द ब्रिज, और वो दोनों ब्रिज पर खड़े होके क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आई विश, या तो मुझे यहाँ पे क्या दिख जाए, फिश विद द ग्रेट बिग आइज. देन दे आर थिंकिंग ओके अगर फिश नहीं दिख रही है, देन should I wish to see a water rat gliding here, or I can see the dancing spider sitting on a red flag, yellow flag here, yellow flower. Then they are wishing हम यहाँ से खड़े होके देखें और हमें अभी कुछ स्टोन्स मिल जाए, और जैसे ही हम उन स्टोन्स को वाटर में डालें तो वाटर में क्या बन जाए, सर्किल्स बने, जो कि हमें ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे. और शैल वी सेल, या फिर हम यहाँ पे क्या सेल कर पाएँ, या फिर हम यहाँ पर फ्लावर बोट बना के तैराएँ और उनको फिर देखें वो कैसे धीरे धीरे तैरती हुई आगे जाती हैं, और कल तक जब हम आएंगे तो पता नहीं वो तो किसी बड़े समुद्र का हिस्सा बन के वहाँ तक पहुँच चुकी होगी. दिस वॉज द पोम, एंड in this poem the main is this, that the speaker and companion are standing on the bridge watching the things. They are watching many things like fish, spider, flower, boat. The poem presents the simple things in a manner that brings great delight. इस पोएम की जो लाइन्स है बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर हम उनको इमेजिन करते हैं, इट गिव्स अस अ ग्रेट डिलाइट, तो उससे हमें बहुत ही अंदर से खुशी महसूस होती है और बहुत ही अच्छा फील होता है. ओके, दिस इज़ द पोम. सो नाउ थोरोली रिपीट द पोम विद मी. यस, स्टार्ट विद मी. If I could see a little fish, that is what I just now wish. I want to see his great round eyes, always open in surprise. I wish a water rat would glide slowly on the other side, or a dancing spider sit on the yellow flags a bit.
I think I will get some stones to throw and watch the pretty circle show. Or shall we sail a flower boat and watch it slowly, slowly float? That's nice because you never know how far it means to go. And when tomorrow comes, you see it may be in the great wide sea. Yes, this was your poem. And now we will just talk something about the poem. If you see the poem, there are how many stanza? 1, 2, 3, 4. This poem has 4 stanza and the rhyme scheme, if we just see the rhyme scheme is here in the regular pattern. Regular pattern means, let's see here, when the end of the each line is, just see the pattern. Fish, wish. Eyes, surprise, means the rhyming pattern is same of the stanza. Same in the next stanza. Glide, side, sit, bit. This type of rhyming scheme is known as regular pattern. This was all about the poem. So read the poem again and enjoy it. Thank you.